Mm.
स्टार्ट करंतु सर स्टार्ट करिवे हां स्टार्ट करंतु पिला जॉइन करी आसे आज्ञा तो very good afternoon to everybody, respected Ajit sir, for giving opportunity to take the class. I think the students, I would get a confirmation from you that the first block is of theoretical framework. Anybody can repeat whether the first block is theoretical framework? It is yes or no? First block टा अछि theoretical framework उपरे ठीक अछि तो syllabus. Unit 1 अछि nature and scope of accounting. Is it correct? Anybody can? Okay. So I will start from the concept of accounts and the evaluation of accounts. See, accounts now what we will be studying is double entry system of bookkeeping. Why it is double entry system of bookkeeping? Because before account was single entry system of bookkeeping. Single entry means only one side of the accounts will be recorded. Okay, double entry means both the side of the accounts will be recorded. What does it mean? It means when you're purchasing anything from a shop, okay, the shop is recording from the point of view that it is selling to you, okay, and you have to record on the point of view that you are purchasing from the shop. It is known as double entry system of bookkeeping. Okay, unless and until you keep record of the purchase in the stock register, you also cannot show that you have purchased the material. So it has started long before the days of Arthashastra, Kautilya, and we know that during where before the Raja were there, at that time also the accounting was there, but it was in a different form. After the evaluation of money, accounts came into account. Before the evaluation of money was not there, there was a system of barter. So barter system was exchange of goods for goods. तो तब accounts का नहीं था. जब money आ गया, exchange of goods for money, then when money is there, when quantitative phenomenon is there, then the need and scope of accounting arises. Accounts is a very important criteria because if you are involved in any monetary transaction, you know money is life in business. We are really concerned today with business, and I will congratulate you that you have chosen the right track of taking the BCom IGNO also, because it is an ample opportunity of scope. Okay, so the father of accounting we should know Luca Pasilio. He belongs to Italy. So he is the inventor of this accounts, double entry system of bookkeeping. So before the single entry system was there, now the double entry system is a very, very important system. I am giving an example of double entry so that you will be clear concept. You are investing money, you are keeping your money in the bank. Bank has a record of your, and you also have a record of yourself amount of money deposited in a bank. You have a passbook and bank has a cash book. In the bank cash book, when you're depositing, in your name, it should be this much amount of money deposited. Suppose 5,000 money you have deposited. The bank cash book, you will see, okay, your name and your 5,000 rupees might have been written 100%. And your passbook, if you update, there also might have written you have deposited 5,000 in this bank in this date. So that is known as double entry system of bookkeeping. That's why account is very important, because it is a monetary transaction. Any monetary transaction, any sphere and any place, it is very, very important, because for monetary transaction you should have a record. The keeping of record in a systematic and effectively and efficient manner is known as accounts. What is accounting? Accounting is art and science of recording business transaction in a chronological order. Accounting is an art. You will ask questions on how accounting is an art, because if you not practice accounting, you will forget accounting. So more you practice, you will be more skilled and you will be more expertise in maintaining accounts. Accounting is a science. Why it is science? Because it has some rules and regulation. There is some act. There is some accounting standard. We will go in the later part of the block. There are some standard. There are some act. There are some rules and regulation. There are some policy. There are some principle that we have also to follow. That's why accounting is an art and science of recording, classifying, and summarizing. I'm again repeating. It is the science. Accounting is the art and science of recording, classifying, and summarizing. Recording, we have to record whatever expenditure is made by the business. Okay, because we are studying accounts from the point of view of business. We have to keep record of the business.
because in business monetary transaction is very important. So recording is done in a format, in a statement, or in a pro forma that is known as journal. Recording and summarizing. Summarizing is done in a format that is known as ledger. Accounting is the art and science of recording, classifying. Classifying is done in a format known as ledger. And summarizing is done in a format that is known as trial balance. The accounting is the art and science of recording, classifying, and summarizing business transaction. It should be business transaction. It should not be a home transaction. Okay, if it is a home transaction, then it will. Any question you can ask? Yes. Sabika Mat. Sir, sir. Sorry for the interruption. I just have one question to ask. Like this session will be dedicated towards the subject, or we can raise some queries in relation to our admissions and exams and other stuffs as well. That the sir is there. Sir will tell. Ajit sir is there. Okay, sir. Thank you. Okay. My duty is to teach you. So I will be taking the class only. So it is the science, accounting, the art and science of recording, classifying, and summarizing business transaction. Okay, in a systematic and chronological order. Systematic and chronological order. Chronological order means there should be date wise. First there will be January 5th, there will be January 6th. You cannot put first January 6th, then January 5th. Okay, so it should be very in a systematic and chronological order. This is chronological order, date wise. So accounts I have told, keeping records, okay, in a statement in a format is known as accounts. And accounting I have told, accountancy. It is the principle or the concept of accounting, application of accounting is known as accountancy. Application of accountancy will be done by an accountant. The person who maintains the books of accounts is known as accountant. And application of the accounting principles, rules and regulation is known as the accountancy. So then we'll go to why you are studying accounting, what is the need of accounting. The need of accounting arises because in case of sole trader business, because when you talk of accounts, you talk of business. In case of business, if they are not maintaining record of the monetary transaction, of the quantitative transaction, then you will find difficult to do business. जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका अगर हिसाब किताब नहीं रखोगे तो बिजनेस करने का बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. Because bank will ask you the details of the transaction. Company from whom you purchase, they will ask the details of the transaction, details of the amount of money invested, what is your accounts, what is your record. So keeping of records in a proper systematic format is known as accounts. It is a mandatory. It should be supported by the voucher, supported by the bill. Okay. In case of partnership also, there's a huge problem because two partners are there, the accounts are not maintained properly. So suppose partner A has given 10 lakhs, partner B has given 20 lakhs. So they will quarrel within each other. I have invested this much, where is the money? Why there is no adequate amount of money? There is no proper record. तो जहाँ पर पैसा है उधर कॉन्फ्लिक्ट एंड कंफ्यूजन वुड क्रिएट अराइजन आएगा. तो सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन है, तो उसको 100% उसको हिसाब किताब रखना पड़ेगा, ये तो गलती आएगा और प्रॉब्लम ही आएगा. अभी हम जाएंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, उसका 4 ऑब्जेक्टिव है. पहला है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड. सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मतलब इट शुड बी वेरी क्रोनोलॉजिकली, एंड अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस. इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. क्या स्टेप प्रोसेस है? पहला में बोला आप रिकॉर्डिंग करेंगे जर्नल में, दूसरा में बोला उसको क्लासिफाई करेंगे लेजर में, तीसरा में बोला उसको समराइज करेंगे ट्रायल बैलेंस में. उसका 4th स्टेप है, उसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट. उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ठीक है. नंबर 2 है टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कहाँ पर आपको पता चलेगा? यू विल फाइंड आउट फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट. ओके. Trading profit loss account will find out the gross and net profit. From trading account you will find out the gross profit, and from the profit loss account you will go on the net profit. You will find the financial position of a business. Where you will get the financial position of the business? Balance sheet will give you the financial position of a business as on a particular date. और डेट है March 31st. हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से अब दिस ईयर टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर.
Number 4, accounting information regarding related party. Who are the related party who need accounting information? Number 1, the business organization, the owner. Number 2, consumer, customer, supplier, banker. Number 3, tax authority. Number 4, government authority. Number 5, research organization. Number 6, competitor. Number 7, stakeholder. Number 8, stock exchange. Number 9, research institute. Number 10, general public. They all need accounting information. Before accounting, there was a procedure of bookkeeping. I told it was not systematic and skipping the only accounts in a single format. Suppose you have a metal shop, okay, पान का दुकान है, तो आप अगर छोटा पान का दुकान है तो how will keep record? तो पहले वो सिंगल एंट्री में चलता था, ओके, बुक कीपिंग में चलता था, एक बुक है उसमें रिकॉर्ड करते हो जाएगा, लेकिन अभी डबल एंट्री, जो भी रिकॉर्ड करे 2 बार रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एक तो डेबिट होगा, एक तो क्रेडिट होगा. 2 टाइप्स एंट्री मींस इट विल बी इन 2 प्लेस एंड वन विल बी डेबिट, वन विल बी क्रेडिट. बुक कीपिंग और सिंगल एंट्री में क्या था, एक जगह एंट्री होता था, आइदर डेबिट होता था और क्रेडिट होता था, और एक ही जगह होता था. User of financial accounting information I have already told. Investor needed, lender needed, bank need information, creditor need information, owner need information, tax authority need information, employee need information. Accounting as an information system. A question, एक important question आपका आएगा एग्जाम में. Why accounting is known as the language of business? Why accounting is known as the language of business? Accounting is known as the language of business because through accounting we can disseminate information from one place to another. Okay, एक बिजनेस का लैंग्वेज कैसे हो जाएगा लैंग्वेज, बिकॉज अगर बिजनेस का अगर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो उसको अकाउंट्स में हम दिखाएंगे, तो दैट विल डिपिक्ट द रोल ऑफ द बिजनेस, द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, द स्टेटस ऑफ द बिजनेस. सपोज टाटा मोटर्स, इट इज ए गुड ब्रांड. रिलायंस, बिरला, जिंदल, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये सब ब्रांडेड है. कैसे ब्रांडेड है? बिकॉज उनका प्रॉफिट ज्यादा अच्छा है, उसके लिए वी आर टेकिंग इट एज ए वेरी गुड कंपनी. हु इज ए गुड कंपनी? दोज हैविंग ए गुड फाइनेंशियल पोजीशन. They are treated as a very good company, and apart from that above there are also some criteria in which the company can be treated as a very good company. तो आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जो जो बोल चुका हूँ उसी का ऊपर जाएगा. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को क्यों चाहिए? फॉर डिसीजन मेकिंग. डिसीजन आप ले पाएंगे. सपोज एक चीज आप खरीदेंगे तो कम पड़ेगा, एक चीज उसको बनाएंगे तो ज्यादा पड़ेगा. सपोज तो आप क्या डिसीजन लेंगे? तो खरीद के ले आएंगे. सपोज एक चीज आप बनाएंगे तो कम पड़ेगा, खरीदने से ज्यादा हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसको बनाएंगे. And also it help in performance evaluation of the employees, who is working more, who is working less, how the salary will be given, who is skilled, who is unskilled. इनका पर भी you can take decision if you have information. There are different branches. पहले branches था financial accounting, जो अभी बोल रहा था double entry system of bookkeeping. Financial accounting मतलब क्या है? आपका journal, ledger, trial balance, purchase book, sales book, trading profit loss account, balance sheet, etc. etc. But उसका बाद आ गया cost accounting. कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूज्ड एंड इज नीडेड वेयर देयर इज गुड्स आर मैन्युफैक्चर, प्रोडक्ट और सर्विसेज आर रेंडर्ड. अगर गुड्स का मैन्युफैक्चर कर रहा है और सर्विस कुछ रेंडर हो रहा है, देन कॉस्ट अकाउंटिंग आ रहा है उधर. ओके, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स, इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग एनी गुड्स, यू आर मेकिंग एनी गुड्स, देन कॉस्ट अकाउंटिंग विल बी एप्लीकेबल. सपोज एक आपका पेन का फैक्ट्री है, आप पेन बना रहे हैं, तो पेन का रेट कितना रखेंगे? नया पेन बना रहे हैं तो उसका कॉस्टिंग के लिए आपको you have to find out the cost. मटेरियल आपको कितना ला रहा है, लेबर कितना हो रहा है, एक्सपेंसेस कितना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, सेलिंग एक्सपेंस क्या है, एडवर्टाइजिंग क्या है, मार्केटिंग क्या है, उसको कल के हम आप डालोगे इतना पैसा एस्टिमेट हुआ है कॉस्ट, उसका साथ आप 10% 20% मार्जिन रखोगे प्रॉफिट, तो आप बोलोगे सेलिंग प्राइस में इतना रखूंगा. तो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग. द लेटेस्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो आपका बीकॉम में होगा, 3rd ईयर में, 2nd ईयर में. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दूसरा नाम है, इसको याद रखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दूसरा नाम है डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग. बिकॉज मैनेजमेंट को टॉप मैनेजमेंट 3 टाइप का मैनेजमेंट रहता है. तो टॉप, एक तो मीडियम, मिडिल, एक तो लोअर, ओके, और बॉटम. टॉप मैनेजमेंट मतलब जो रहते हैं एमडी, सीईओ, सीओओ, सीएफओ एक्सेट्रा. मिडिल लेवल में रहते हैं जो मैनेजर, जनरल मैनेजर, ईस्टर्न जोन मैनेजर, रीजनल मैनेजर, उन लोग रहते हैं. लोअर में रहते हैं जो सुपरवाइजर, एम्प्लॉई जो काम करते हैं ग्राउंड में, वो रहते हैं. तो डिसीजन, अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट का अगर डिसीजन लेना चाहेंगे, कौन मैनेजमेंट कैसे लेगा? अगर मैनेजमेंट को अकाउंट्स का डिटेल मैनेजमेंट अकाउंटिंग को नहीं मिलेगा, तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ठीक से नहीं होगा. तो दिस इज द लेटेस्ट वन. अभी आप पढ़ेंगे अब एडवांटेज, अकाउंटिंग का एडवांटेजेस क्या है.
एडवांटेज क्या है, आपको मेमोरी में कुछ याद रखना नहीं है, आप भूल जाओगे, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, वी हैव लिमिटेशन। आप उसको रिकॉर्ड कर दोगे, नोट करके रखोगे, उसका बिल रखोगे, तो आपको मिल जाएगा 5 साल 3 साल 4 साल का भी पुराना मिल जाएगा। तो memory will be not used much more if you record it. Number 2, it provide control over the asset. आप asset कौन सा डेट में क्या खरीदे हो उसका भी डिटेल रखना चाहिए। 2005 में कार खरीदो, अभी उसका वैल्यूएशन कितना है। अकाउंट्स अगर मेंटेन होगा तो 2005 से अभी तक उसका डेप्रिसिएशन गिर गिर के आके अभी पता चल जाएगा, अभी तब 5 लाख था, अभी उसका रेट हुआ होगा 1 लाख, ऐसा पता चलेगा अगर अकाउंट्स मेंटेन हुआ है और डेप्रिसिएशन हर साल उसको आप डाले हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसको बोलते हैं, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सब लोग पूछते हैं, जो बच्चे लोग बोलते हैं ये फाइनल अकाउंट है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है कि तुम्हारा आएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, देन आपका आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन आपका आएगा नोट अकाउंट। ओके, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट के लिए अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वट एवर इंफॉर्मेशन यू नीड, यू हैव टू गिव इन स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। Okay, how many number of employees are there in the organization? What is the salary of the organization? What is the amount of turnover you are having? What is the total salary you are giving? Everything in quantitative. Okay, तो statistical figure. तो statistical figure मतलब accounts record होना ही चाहिए, मतलब जरूरी हर टाइम आपको पूछेंगे, statistical data ही आपको देना पड़ेगा। कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, कितना सैलरी उनको मिल रहा है, कितना आउटपुट हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, कितना परचेज हो रहा है, एवरीथिंग इन क्वांटिटेटिव एंड स्टैटिस्टिकल फिगर। तो आप कंपैरिजन भी कर पाएंगे, लास्ट ईयर का सेल्स कितना होता है, इस ईयर का सेल्स कितना होता, अगर अकाउंट्स में अगर मेंटेन हुआ है उसको भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। क्यों देयर इज लेस सेल दिस ईयर ड्यू टू कोरोना, अभी इस साल लेस हो गया, तो यू कैन आल्सो फाइंड आउट द रीजन इफ इट इज रिकॉर्डिंग एंड अकाउंट्स आर प्रॉपर्ली मेंटेन विद बिल एंड वाउचर। मैनेजमेंट को डिसीजन के लिए भी ये हो पाएगा कि इस साल मैं प्रोडक्शन करूंगा या नहीं करूंगा, रिगार्डिंग कोरोना आल्सो। एंड फ्रॉड भी नहीं हो पाएगा, अगर छूट गया होगा, गलती से रिकॉर्ड नहीं किए, तो यू कैन डू फ्रॉड, एनीबडी कैन डू फ्रॉड, अकाउंटेंट आल्सो कैन पुट द फ्रॉड। टैक्स मैटर के लिए गवर्नमेंट जो टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स के लिए बोलता है, आपका टैक्स मैटर भी ठीक हो जाएगा अगर अकाउंट्स मेंटेन हुआ है, उसी का ऊपर टैक्स आएगा। देयर इज सम लिमिटेशन आल्सो, ये उसका एडवांटेज है, सम लिमिटेशन आल्सो। व्हाट आर द ट्रांजैक्शन व्हिच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स? द ट्रांजैक्शन व्हिच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स आर क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन। Okay, honesty, truth, beautiful, etc. This qualitative transaction cannot be recorded in accounts. Number 2 is the data is historical in nature. तो 5 साल का पुराना डाटा उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो इज वेरी लिमिटेशन। 15 साल डाटा भी उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो हिस्टोरिकल रहता है। ठीक है, पुराना डाटा को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो पहले आएगा उसको तो हम पता नहीं है। तो when the future data will come, then we will record. Data which is spent, which is done, we have to record that and you have to keep. Facts recorded in financial statement are greatly influenced. ठीक है, जो फैक्ट्स आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं वो इन्फ्लुएंस हो जा रहा है। क्यों इन्फ्लुएंस हो जा रहा है? बिकॉज यू कैन मैनिपुलेट द अकाउंटेंट, इफ यू डोंट नो हाउ टू मैनिपुलेट, वो उसको मैनिपुलेट भी कर पाएगा। ठीक है, तो बस 5,000 है, उसको 15,000 कर पाएगा अगर उसका वाट्स ने अमाउंट एंड फिगर लिखा नहीं हुआ है। समटाइम डाटा आर इनसफिशिएंट, तो पूरा डाटा नहीं मिलता है, सफिशिएंट डाटा नहीं मिलता है, तो उसको भी देख के हमारा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग है। कभी कभी डाटा सफिशिएंट नहीं मिलता है, टोटल डाटा नहीं मिलता है, तो प्रॉब्लम एक तो होता है। अभी आगे आपका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कितना बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। 2 टाइप का बेसिस, अगर 3 टाइप का बेसिस है। एक तो कैश बेसिस, मतलब आप दुकान को जाएंगे, खरीदेंगे, पैसा देंगे, दैट इज कैश बेसिस। और एक तो है अक्रूवल बेसिस, उसको बोलते हैं क्रेडिट बेसिस। दुकान को जाएंगे, चीज लाएंगे, लेकिन पैसा पीछे देंगे, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 15 डेज। और एक है हाइब्रिड बेसिस, आपका इधर नहीं है, नया है, समथिंग विल बी गिवन इन कैश एंड समथिंग विल बी गिवन इन क्रेडिट। The features, qualitative features of accounting information, that accounting information are understandable, present in accounting information so that it can be understood by others. Only the commerce graduate can understand the accounting information properly. अब जो भी डिपार्टमेंट जाइए, एवरी डिपार्टमेंट हैज अकाउंट्स टू डील विथ। यू गो टू एनी यूनिवर्सिटी, एनी कॉलेज, उनका अकाउंट्स है। यू गो टू एनी होटल और रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम, उनका भी अकाउंट्स है। Go to railway department, insurance, anywhere accounts is there, must. That's why the scope and need of the BCom student is very much, very useful account, and it is relevant. It's relevant होना चाहिए।
with supporting documents so that it will be useful for others also, and also reliable. Whatever the information it is recorded, that should be reliable. It should be signed by the accountant, it should be signed by the higher authority, it should be signed by the competent person in the cash book, so that it will be reliable. And the function of accounting क्या है, मैं अभी बोल चुका हूँ आपको. चार अभी फंक्शन बोला था. एक तो रिकॉर्डिंग जर्नल में होगा, क्लासिफाइंग लेजर में होगा, समराइजिंग ट्रायल बैलेंस में होगा. ठीक है. देन और दो है उस एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में अभी जो बोला था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल अकाउंट्स, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट, उसको एनालिसिस एंड इंटरप्रेट करेंगे कि नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है ना घट रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है ना खराब है. देन वी विल मेक ए कम्युनिकेशन, उसको बोलते हैं कम्युनिकेट. अभी बोले थे अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. So this information will be communicated to banker, to insurance company, to suppose police authority उसको पूछा है आपका कंपनी का डिटेल दो, गवर्नमेंट को हम दे सकते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट को दे सकते हैं, फिशरी डिपार्टमेंट को दे सकते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे सकते हैं, फाइनेंस को दे सकते हैं, कॉमर्स को दे सकते हैं, एनीवेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दे सकते हैं. Competitor they want to find out in paper in case of audited financial statement. Okay, the investor needed to know, customer will know. So this is all about the chapter 1. We'll go to chapter 2. At last, I'll take up the question. Okay. Accounting process and rules. Accounting process अभी बोला, recording, summarizing, recording, classifying, summarizing, and analysis and interpretation, then communication. ठीक है. तो पहले आप जर्नल करेंगे, उसके बाद आप लेजर करेंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस करेंगे, उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट. उसमें सब में आएगा आपका ट्रांजैक्शन. व्हाट इज ट्रांजैक्शन? द रिकॉर्डिंग इज डन इन ए क्वांटिटेटिव फिनोमेना, दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शन. ओके, कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है. अकाउंट कितना टाइप का है? बेसिकली 3 टाइप का अकाउंट है. एक तो पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, एंड थर्ड है नॉमिनल अकाउंट. What is personal account? Personal account means related to your, and personal account are also subdivided into 2 types. Personal account are also 2 types. One is impersonal account, another is a personal account. Yes, impersonal account means related to name of a person. Okay, like your name and my name, Sachin Tendulkar is a personal account. Okay, and Virendra Sehwag, Anil Kapoor is all personal account. Impersonal account means the related to not personal but related to name of the institution, like Bank of India. Okay, it is known as artificial personal account. The name of the people is known as natural personal account. Okay, Bank of India, Ravenshaw University, IGNO, they are known as artificial personal account. Okay. Then real account. Real account also are 2 type. और एक आपका थर्ड भी एक पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मींस क्या? उसमें 2 चीज ज्यादा आता है. एक तो एडवांस, कुछ एडवांस अगर दिए हो वो आएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, बिकॉज द पर्सन हु इज गिवन इज इंपॉर्टेंट. एनी लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग, कुछ आपको अगर कुछ ड्यूज पेंडिंग है तब भी आपका नाम में आएगा, वो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट 3 टाइप का है. एक तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एक तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. अभी रियल अकाउंट. रियल अकाउंट 2 टाइप का है, एक तो टैंजिबल रियल अकाउंट, एक तो इंटेंजिबल रियल अकाउंट. टैंजिबल रियल अकाउंट क्या है? विच कैन बी टच बाय हैंड्स एंड आईज ऑफ ए पर्सन. आप उसको टच कर पाओगे और आंख में देख पाओगे, उसको बोलते हैं एनीथिंग यू कैन डू, ऑल आर टैंजिबल. इंटेंजिबल मींस व्हिच यू कैन नॉट सी, आईज एंड यू कैन नॉट टच. एग्जांपल, आपका कॉपीराइट, आपका गुडविल, आपका ब्रांड वैल्यूएशन, आपका रेपुटेशन, ये आप उसको नहीं देख पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. ठीक है. Nominal account. Nominal account का no classification is there because nominal account, there is no classification on nominal account because उसका डेबिट क्रेडिट जो आइटम है उसी को उसमें उसका क्लासिफिकेशन है. उसका डेबिट है इनकम एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट है, उसका डेबिट है नॉमिनल अकाउंट का ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, एंड उसका क्रेडिट है इनकम एंड गेन. तो अभी ये बोलोगे सर इधर आप डेबिट क्रेडिट क्यों बोले? बिकॉज नॉमिनल अकाउंट का क्लासिफिकेशन नहीं है. और रियल अकाउंट का भी डेबिट है, रियल अकाउंट का भी डेबिट है. डेबिट में रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट रियल अकाउंट में क्रेडिट व्हाट गोज आउट.
पर्सनल अकाउंट का भी डेबिट है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट में है क्रेडिट द गिवर। तो उसी नॉमिनल अकाउंट में है डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो उसके बाद हम जाएंगे, दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड द डेबिट एंड क्रेडिट द रूल्स। ओके, डेबिट एंड क्रेडिट। रियल अकाउंट का एग्जांपल आप जाएगा फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल एक्सेट्रा। ओके, कैश। एंड नॉमिनल अकाउंट में आपका जाएगा जो ट्रेडिंग पीएल में आएगा, नॉमिनल अकाउंट जाएगा सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एक्सेट्रा। पर्सनल अकाउंट आपका नाम जाएगा पर्सनल अकाउंट। This is the principle of double entry. The golden rule of double entry is that this is the principle. पर्सनल में डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, रियल में डेबिट क्रेडिट क्या है, एंड नॉमिनल में डेबिट क्रेडिट क्या है। दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ डबल एंट्री। ओके, दिस इज मॉडर्न रूल। ट्रेडिशनल, सॉरी, दिस इज द ट्रेडिशनल रूल। मॉडर्न रूल भी है, तो यू फॉलो दिस ट्रेडिशनल रूल। ओके, इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इन केस ऑफ रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोes out. In case of nominal account, expenses losses are debited and income and gain are credited. This is the accounting rule also. A small example I will give. Paid rent rupees 1000. Okay, so you paid rent of rupees 1000. So how to do the accounting journal? There is a format. Okay, you'll put the date, you'll put the particulars, you'll put the page number, that is known as a ledger folio. In journal you put page number of ledger folio. In ledger you'll put the page number of journal, that is journal folio. Then you'll put a inner column of details, then outer column of amount. Okay, suppose paid rent to Ramesh or paid rent only. The question is paid rent. Suppose you made a payment to a party of rent, so that is two transaction, two aspect. One is rent, another is cash. Because when you're paying rent, either it will be cash or it will be in check. Suppose there is an amount of 5,000, so you are paying in cash. So paid rent means rent is there, cash is there. Two things are there. So rent is a nominal account because it is coming in profit loss account, and cash is a real account. Okay. So rent is a nominal account. Whether we know the two rule is that debit and credit. Debit is expenses losses. So it is an expenses. That's why it will be debited. Expenses losses. Okay, it is an expenses of the organization. So rent will be debited. And cash, it's a real account. Real account debit is debit what comes in, credit what goes out. So it is cash is going out from the organization in paying the rent. So cash will be credited. So rent account debited to cash. उसके एक नरेशन भी है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ, उसी को आप रिपीट करोगे। विद इन ब्रैकेट बीइंग लिखोगे, कॉमा, एंड द क्वेश्चन पेड रेंट इन पेड रेंट ऑफ रुपीज 4000 लाइक दिस। इधर और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, पेड रेंट ऑफ 4000 ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए। पेड रेंट ऐसे होने से कुछ होगा नहीं, बिकॉज उसका वैल्यू नहीं है। वैल्यू, विदाउट वैल्यू अकाउंटिंग इज नथिंग। You do not have statistical value, do not have figure, do not have amount, then you cannot record that. Okay. So this is about unit 2, I think. Then third is accounting principle. Accounting principle is very, very important. Okay. You have some terms, technical term, that is business entity. Is a specifically identify business enterprise. Business entity उसको बोलते हैं। जैसे खिमजी ज्वेलर्स, उनको business entity बोलते हैं। ठीक है। इवेंट एंड ट्रांजैक्शन क्या है? व्हाट इज इवेंट एंड व्हाट इज ट्रांजैक्शन? इवेंट आपका होता है, देयर इज अ सिंगिंग कंपटीशन, दैट इज एन इवेंट। व्हाट इज एन ट्रांजैक्शन? ओके, ट्रांजैक्शन मींस देयर इज अ मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट इज देयर। ओके, इवेंट में बी फॉर चैरिटेबल और इवेंट में बी मॉनेटरी, इवेंट में बी नॉन मॉनेटरी। Goods refer to the article in which the business deals. Okay, goods refer to the article in which the business deals. Only those articles which are purchased for purpose of sales are known as goods. Suppose you are having a furniture shop. You are purchasing furniture and selling the furniture. Okay. For you it is goods, but for us the furniture is an asset in our home, in our business. फर्नीचर शॉप के लिए जो फर्नीचर वो खरीदता है उसके लिए वो गुड्स है, उसके लिए वो एसेट नहीं है। बट दूसरे दुकान के लिए फर्नीचर इज एन एसेट। ओके। डेप्टर इज वन हु ओस अमाउंट टू द बिजनेस। क्रेडिटर जो आपसे खरीदता है क्रेडिट में, बाकी में खरीदता है, पैसा नहीं देता है, उसको क्रेडिटर बोलते हैं। जिसको आप सेल करते हैं उसको बोलते हैं डेप्टर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, व्हाट इज बुक्स ऑफ अकाउंट? बुक्स ऑफ अकाउंट में आपका कैश बुक है,
बुक्स ऑफ अकाउंट में आपका परचेज बुक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में आपका सेल्स बुक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में आपका स्टॉक रजिस्टर है, ऐसे बहुत सारा बुक्स आपका पास है। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है DR एंड क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म है CR। D will be capital, R will be small. Credit, C will be capital and R will be small. What is asset? It is those value of economic resources and owned by the enterprise. It is those value of economic resources owned by the enterprise. Economic resources जहाँ से कुछ बेनिफिट आएगा फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, उसको बोलते हैं एसेट। एक्सपेंडिचर मीन्स द स्पेंडिंग ऑफ मनी और इंक्वायरिंग अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट और फॉर सर्विस रिसीव्ड बाय द बिजनेस। जो भी हम खर्चा करते हैं बिजनेस का बेनिफिट के लिए कुछ मिलेगा, उसलिए उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। कैपिटल the amount of money invested by the business owner, the amount of money invested by the owner in the business is known as capital। जो अमाउंट इन्वेस्ट किया हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको हम बोलते हैं कैपिटल। ड्राइंग्स, खुद का दुकान है, होटल का दुकान, खुद होटल का दुकान से खुद तुम जो डेली बनाते हो, खाना बनाते हो, उसको ले आते हो, उसको बोलते हैं ड्राइंग ऑफ गुड्स। खुद का दुकान है, तुम उधर से ड्रॉ करते हो, खुद का पर्सनल खर्चा करिए 1000 रुपया डेली, उसको बोलते हैं ड्राइंग ऑफ मनी। Everything should be recorded in accounts. Everything should be recorded. Some are not recording, some are recording, but all these things matter. Trade discount is there. If you take in large quantity of bulk of goods, then trade discount is given. Cash discount is also given. If you pay within the short period or you pay immediately, then cash discount is given. Solvent, if your asset is more than liability, you are solvent. If your liability is more than asset, you are insolvent. Bad debt, suppose you have taken goods of 10,000 rupees and you are unable to pay, or you are pay up 2,000 rupees, the 8,000 is known as bad debt. Stock, the amount of goods which is lying with you at the end of the financial year, एंड खत्म हो गया, फाइनेंशियल खत्म हो गया, फिर भी वो चीज आपका पास है, दुकान में सेल नहीं हुआ है, दैट इज नोन एज द स्टॉक। This is all about accounting principle. The next is, after that we will go with the discussion of doubt clearing. Any doubt you can ask also. डबल एंट्री सिस्टम में बोल दिया आपको, डबल एंट्री सिंगल एंट्री के बारे में ऑलरेडी इट इज गिवन इन द बुक। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अभी देयर विल बी अ क्वेश्चन इन द माइंड, who prepare accounting standard? There is a committee, National Advisory Committee on Accounting Standard। अभी हो गया आपका नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ऐसे अभी हो गया है NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, सॉरी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्शन हो गया सर, अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA अभी हो गया है, पहले था नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। They, in consultation with ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, frame the accounting standard and submit to Ministry of Company Affairs, okay, Government of India. Why they do accounting standard? There is a question. Those who have accounts, those who have act, okay, that's Company Act is that now it is in 2013, Sole Chartered Representative Act, Partnership is Act 1932, जो एक्ट हो गया है, एक्ट को एवरी ईयर चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज आर्ट के अंदर बहुत सेक्शन है, बहुत सारा सब सेक्शन है, आर्टिकल है, तो क्या बोलते हैं, अगर छोटा मोटा कुछ है, कुछ चीज आ गया, उसको चेंज करना चाहिए, कुछ गलती हो गया, कुछ छूट गया होगा, तो उसको वो बोलते हैं अकाउंटिंग, उसको स्टैंडर्ड निकाल के एक तो निकाल देते हैं। इन एडिशन टू दैट दिस स्टैंडर्ड आल्सो इज एप्लीकेबल। अगर स्टैंडर्ड और मैं आगे बोल देता हूँ, स्टैंडर्ड का बाद भी अगर कुछ आ गया तो बोलते हैं गाइडेंस नोट, तो उसलिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है। ये इसमें बहुत सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आपको हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम याद रखना पड़ेगा और उसका मीनिंग एक दो लाइन रखना पड़ेगा, सो दैट अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से उसको लिख पाएंगे। द बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज दैट स्टैंडर्डाइज रूल्स होगा, ओके, तो आप तमिलनाडु में जो फॉलो कर रहे हैं, ओडिशा में वही फॉलो करोगे रूल। एंड अभी ऑल IFS आ रहा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आ गया, तो अमेरिका में जो अप्लाई करोगे इधर भी वही अप्लाई करोगे, अभी आ गया है। एंड जो भी प्रॉब्लम होगा आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, ओके। अगर प्राइवेट का कुछ रूल्स रेगुलेशन अलग है, गवर्नमेंट का कुछ रूल्स रेगुलेशन अलग है, ऐसे होगा नहीं, सेम रूल्स रेगुलेशन, ओके। एंड अभी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, अमेरिका का जो उधर वो फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अभी इंडिया भी उसको अडॉप्ट कर रहा है,
तो देयर इज स्कोप इज इंक्रीज्ड, द इंडियन पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन गो टू अमेरिका, and अमेरिका चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन कम टू इंडिया. तो ऑब्जेक्टिव अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी नाम भी हो गया है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं आप जो भी अकाउंट्स में मेंटेन करते हो, रिकॉर्ड करते हो, उसको डिस्क्लोज करो. कहाँ पर डिस्क्लोज करोगे? फुट नोट पे डिस्क्लोजर करोगे, डिस्क्लोजर नोट पे डिस्क्लोज करोगे. क्या डिस्क्लोज करोगे? एग्जाम्पल, सपोज आप स्टॉक का मेजरमेंट कर रहे हो, कौन सा मेथड से मेजर कर रहे हो? सपोज गुडविल का मेजरमेंट कर रहे हो, कौन सा मेथड से मेजर कर रहे हो? बहुत सारा मेथड है. सुपर प्रॉफिट मेथड मेजर कर रहे हो, कैपिटलाइजेशन मेथड में मेजर कर रहे हो, तो उसको आइडेंटिफाई करो. डेप्रिसिएशन चार्ज करो, कौन सा मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो? स्ट्रेट लाइन मेथड में कर रहे हो, डब्ल्यूटी में कर रहे हो, एनुटी में कर रहे हो, तो उधर स्पेसिफिकली लिखो. बिकॉज लिखने से क्या होगा, तुम्हारा कंपनी आर्टिकल एसोसिएशन में जो लिखा होगा, सपोज कंपनी विल फॉलो दिस मेथड एंड तुम फॉलो क्या किया, उसको दे विल मैच. ओके, अगर तुम नहीं लिखोगे, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल रेलिवेंट फैक्ट, देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी इन अकाउंट्स. नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी क्या बोल रहा है? अभी मैं बोल रहा था लिफो है, लास्ट इन फास्ट आउट. जो लास्ट है उसको आगे रखो रिकॉर्डिंग के लिए, फास्ट इन फास्ट आउट जो पहले आएगा उसको पहले रखो. सिंपल एवरेज मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड है, ठीक है. ऐसे बहुत सारा और भी मेथड है, हिपो, निफो एक्सेट्रा. तो इन्वेंटरी को वैल्यूएशन कैसे करोगे, कौन सा मेथड से करोगे, उसको भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. कॉस्ट प्राइस में करोगे या मार्केट प्राइस में करोगे, उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा. नंबर 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट. अभी आपको बोला था 5 मिनट आगे. कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 चीज है, एक तो फाइनेंस एक्टिविटी, एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. फाइनेंस एक्टिविटी में आप लोन लिए बैंक से, उसको रिकॉर्ड दिखाइए. ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप और आपका इन्वेस्टमेंट किया, आपका ऑपरेशन क्या है, कहाँ सेल हुआ है, उसको दिखाइए. ठीक है. इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया उसको भी दिखाइए. गोल्ड, ज्वेलरी, स्टॉक, सर, उसको दिखाना पड़ेगा. उसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट. कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है. नंबर 4 है कॉन्टीजेंसी इन इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट. आफ्टर बैलेंस शीट के बाद अगर कुछ कॉन्टीजेंसी हो गया, एग्जांपल मार्च 31 को तुम्हारा एक तो केस चल रहा है, मार्च 31 को तुमको पता नहीं चला वो केस का स्टेटस क्या है, तो क्या करोगे? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 बोल रहा है अगर कुछ कॉन्टीजेंसी इवेंट आ रहा है अकाउंट मार्च 31 का बाद, ओके, सपोज मार्च 31 में तुम दिखा रहे हो कि ये केस तुम जीतोगे लेकिन अप्रैल 10 में हार गए, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशन बोल रहे हैं उसको क्या ट्रीटमेंट करोगे. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 बोल रहा है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करोगे. कंपनी एक्ट 1950 जो 2013 में बोल रहा है कि अकाउंट्स में आप डेप्रिसिएशन स्टेट लाइन मेथड में चार्ज करोगे, ठीक है. लेकिन इनकम टैक्स 1961 बोल रहा है कि आप डेप्रिसिएशन आप डब्ल्यूडीबी मेथड में चार्ज करोगे. अकाउंटिंग 7 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आ गया, जो ब्रिज बड़ा बड़ा ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके लिए भी रूल्स रेगुलेशन है, बिकॉज देयर आर 2 पार्टी इन्वॉल्व, वन इज कॉन्ट्रैक्टर एंड अदर इज कॉन्ट्रैक्टी. तो उनका रूल्स रेगुलेशन क्या है, बिकॉज कोई 5 साल लगता है, कोई 10 साल लगता है, तो उसको कैसे पेमेंट करेंगे, उसको कैसे सर्टिफिकेट को अप्रूव करेंगे, उसका रूल्स रेगुलेशन भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिया है, बिकॉज देयर इज अ मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट इज देयर. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 पॉलिसी अगर कुछ चेंज हो रहा है, अगर लास्ट ईयर आप डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट में किया, दिस ईयर आप डब्ल्यूडीबी कर रहे हो और पॉलिसी चेंज करो, उसको भी आप दिखाना पड़ेगा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, any income you are getting from anywhere you have to show it. Suppose तुम्हारा आपका एरिया में you are selling some refreshment, from that also getting income, you have to show that. Accounting for fixed asset, अगर कुछ fixed asset है उससे भी कुछ इनकम आ रहा है, तो that also you have to show. तो fixed asset क्या क्या इनकम आ रहा है. ऐसे आपका 11, 12, 13 से लेके अभी 32 तक है. तो ओनली विल ओवरव्यू 11 में क्या है, चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज. अगर फॉरेन का जो डॉलर है वो चेंज हो रहा है हर डेली, पर इंडिया का रुपीज नहीं चेंज हो रहा है डेली, तो उसके में अगर कुछ चेंज हो गया है तो उसको भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रूल्स रेगुलेशन है, उसको हमको क्या डील करना है वो भी देखना पड़ेगा. अकॉर्डिंग फॉर गवर्नमेंट गवर्नमेंट ग्रांट देता है कभी कभी, तो गवर्नमेंट ग्रांट को कैसे ट्रीटमेंट करोगे, गवर्नमेंट ग्रांट स्पेसिफिक है, गवर्नमेंट ग्रांट नॉर्मल है, उसको भी हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट 2 टाइप का है, एक तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. विद इन 1 ईयर इज शॉर्ट टर्म, मोर देन 1 ईयर इज लॉन्ग टर्म. उसका क्या इन्वेस्टमेंट करोगे, क्या ट्रीटमेंट करोगे, कहाँ पर दिखाओगे, उसको भी देखना पड़ेगा. अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन, वेरी गुड एग्जांपल आई विल गिव. आपका हीरो होंडा मिल गया, देखो उषा लेक्सस मिल गया, टाटा डोकोमो मिल गए, उसको बोलते हैं अमालगमेशन, ठीक है. तो उनका बैलेंस शीट, इनका बैलेंस शीट, इनका एसेट, इनका लायबिलिटी, जो भी है प्रॉपर्टी सब मिला लिए,
तो उसका रूल्स रेगुलेशन क्या है, अमल के मिशन का क्या है, कौन खरीदा, किसको खरीदा, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, इसका रूल्स रेगुलेशन करना ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय अगर रिटायरमेंट हो रहा है उसे ग्रेचुइटी मिल रहा है कि नहीं है, उसका पेंशन मिल रहा है कि नहीं है, न्यू पेंशन मिल रहा है कि नहीं, ओल्ड पेंशन मिल रहा है कि नहीं है, उसको के लिए बिकॉज मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट इज देयर, उसको भी आप एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में देख पाओगे। बोरिंग कॉस्ट, अगर कुछ आप खरीद कर लाए हो, कहाँ से लाए होगे, लोन लाए होगे, इंटरेस्ट लाए होगे, उसका भी ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं बोरिंग कॉस्ट। 17 में सेगमेंट रिपोर्टिंग एक तो नया चीज है, एवरी सेगमेंट शुड बी रिकॉर्डेड। ओके, रेवेन्यू सेगमेंट अलग है, प्रॉफिट सेगमेंट अलग है, लॉस सेगमेंट अलग है, एसेट का सेगमेंट अलग है, लायबिलिटी का सेगमेंट अलग है, तो सेगमेंट वाइज इसको रिपोर्ट हम करते हैं। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर पहले था कि अगर आपका कोई जान पहचान उसी कंपनी में काम कर रहा है तो वो कंपनी में जो काम कर रहा है जो चीज वो बाहर में जाके नहीं बेच पाएगा, उसको बोलते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। लीज आपको पता है बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो माइंस ले जाते हैं 99 ईयर्स 90 ईयर्स, ओके, फॉर सिंपल अमाउंट ऑफ मनी दे डग इट एंड गेट दैट गोल्ड, क्रोमाइड, कॉपर एक्सेट्रा, ओके, उसके लिए भी अकाउंट्स है, कैसे क्या फॉलो होगा। अकाउंट शेयर 20 बोलता है ईपीएस अर्निंग पर शेयर, एक शेयर का वैल्यू कितना होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको बोलते हैं ईपीएस अर्निंग पर शेयर। अकाउंट शेयर 21 बोलता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है कि एक हेड ऑफिस है, उसका ब्रांचेस है ऑल ओवर उड़ीसा, ओके, जैसे नाल्को है, इट्स नवरत्न कंपनी एंड इट्स फ्राइड ऑफ उड़ीसा, तो उसका बाहर में एक तो कंपनी है जिसका हेड ऑफिस उड़ीसा में है लेकिन ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया है, और दूसरा कंपनी का देखो इंडिया में हेड ऑफिस, बॉम्बे में हेड ऑफिस है, ब्रांचेस ऑल ओवर उड़ीसा है, लेकिन इसका हेड ऑफिस उड़ीसा भुवनेश्वर में है, ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया, इंडिया का बाहर भी है। तो अगर उसका टोटल नाल्को का देखेंगे, हिसाब देखेंगे इंडिया में कितना उसका हो रहा है, तो इंडिया का जितना जगह में ब्रांचेस है, विशाखापट्टनम, अंगुल, दामनजोड़ी जहाँ पर है, सबको हम रिकॉर्ड करके कंसोलिडेट करके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन इनकम, अगर टैक्सेशन का है आपका, पहले था देखो बहुत सारा टैक्स था, एक्साइज टैक्स था, इवन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स यू हैव टू पे एक्साइज, इनकम टैक्स, इनकम करने का इनकम टैक्स, सर्विस मैटर में सर्विस टैक्स, ओके, सेल्स टैक्स, अभी जीएसटी आ गया तो ये चेंजेस हो जाएगा। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहाँ पर अगर किए, कौन सा इन्वेस्टमेंट किए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किए, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किए, ओके, व्हाट एवर इन्वेस्टमेंट, बैंक में इन्वेस्टमेंट किए, शेयर में इन्वेस्टमेंट किए, सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किए, एलआईसी में इन्वेस्टमेंट किए, उसका भी अकाउंट से उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन अकाउंट स्टैंडर्ड बोल रहा है। अकाउंट स्टैंडर्ड 24 बोल रहा है डिसकंटिन्यू बिजनेस, अगर ऑपरेशन, अगर बिजनेस कुछ बंद हो गया है तो उसको कैसे खोलोगे, क्या करोगे, अगर उस बिजनेस बंद होने के बाद उसका रूल्स रेगुलेशन क्या है, उसका अकाउंट स्टैंडर्ड 24 बोल रहा है। अकाउंट स्टैंडर्ड 25 बोल रहा है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हमको पता है कि हम अप्रैल 1 से मार्च 31 नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर है, बट हम अप्रैल 1 से सितंबर 30 तक भी हम एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना पाएंगे। क्यों बना पाएंगे? अगर हमारा ज़्यादा प्रॉफिट है मतलब हम उसको कुछ डिविडेंड देंगे, तो वो अप्रैल 1 से 30 सितंबर जो हम बनाएंगे उसको बोलते हैं इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसको रिपोर्टिंग करने का उसका नाम है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25। तो इंटरिम डिविडेंड देने के लिए, बिकॉज ये बीच का ये जो बीच का है 9 महीना क्या है, उसको जो प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो हम उसको डिविडेंड देंगे शेयर होल्डर को, उसके लिए उसको बोलते हैं इंटरिम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से इंटेंजिबल एसेट, जैसे गुडविल है, आपका रेपुटेशन अच्छा है, उसका बिजनेस हो रहा है, गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, लाइसेंस है, ट्रेडमार्क है, उसका भी वैल्यू है तो उसका भी रिकॉर्ड होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27, अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी है, उसका 2-3 कंपनी इन्वॉल्वमेंट है, सब्सिडरी कंपनी, तो उसका भी रिपोर्टिंग करना पड़ेगा मिला के एज ए होल। टाटा ग्रुप ऑफ सन्स का कंपनी जैसे टाटा स्टील है, टाटा केमिकल है, टाटा पावर है, टाटा स्टील है, टाटा स्टील इंडस्ट्री है, बहुत सारा है। 28 बोलते हैं इम्पायरमेंट ऑफ एसेट, अगर एसेट कुछ खराब हो गया है, नॉट गिविंग एनी रिजल्ट, हाउ टू डिस्कार्ड द एसेट, हाउ टू परचेज द एसेट, हाउ टू री इंस्टीट्यूट द एसेट, उसका अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है, कितना साल आप एसेट रख पाओगे, उसका प्रोविजन क्या है, कैसे खरीदोगे, कहाँ से खरीदोगे। अकाउंट स्टैंडर्ड 29 बोल रहा है प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी कंटीजेंट एसेट, अभी मैं बोल रहा था जो मार्च 31 में जो केस चल रहा है, अगर आपको पता नहीं है ये केस आप जीतोगे कि हारोगे, आप सोचे जीतोगे लेकिन उसका बाद हार गए, तो अगर हार गए तो ये तुम्हारा हो गया कंटीजेंट लायबिलिटी, अगर जीत गए तो ये तुम्हारा हो गया कंटीजेंट एसेट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30, 31, 32 इज वेरी न्यू, इट इज रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आप जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करिए, मेजर करिए कितना आपको मिलेगा। नंबर 2, उसको प्रेजेंट करिए, उसको दिखाइए।
नंबर 3 उसको टोटल इन्फॉर्मेशन दीजिए, कितना स्टॉक शेयर कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, कितना वैल्यू का। जैसे सत्यम का स्कैंडल हुआ था, सत्यम का स्कैंडल होने के बाद उसका स्टॉक शेयर पूरा नीचे घट गया, प्राइस भी घट गया। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में बोल रहा था, अभी भारत का अकाउंट्स भी अमेरिका देख पाएगा, अमेरिका अकाउंट्स भारत देख पाएगा, बिकॉज इफ यू फॉलो द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, there is need and procedure is that is very important, because changes have been made as for the tax purpose. You should have a goal, and the goal should have as per the planning you do and develop it, and the procedure should be adapted properly. IFRS भी है, अब IFRS को उसका नंबर याद रखिए, उसका नाम भी याद रखिए। जैसे IFRS 1 है, अभी उसको बोलते हैं इंडियन AS 101। तो IFRS 1 है इंटरनेशनल बॉडी में, उसको इंडियन AS 101 उसको भी बोलते हैं। उसका नाम क्या है? फर्स्ट स्टेप एडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। IFRS 2 है शेयर बेस्ड पेमेंट, इंडिया का है 102। तो ऐसे IFRS 3 है, 4 है, लेके IFRS 13 तक है, ठीक है। तो वी शुड बी कन्वर्जेंस टू IFRS so that we can adapt it easily, we can follow it easily, and you can pass on the information to each and every person to that properly. And challenges is there conversion, but internationally accounts, our financial heritage, financial health will be better and proper. There is a huge concept of this accounting standard in Indian AS, because when business was not complicated and accounting was done at local level, then accounting standard was based on local GAAP. What is local GAAP? What is GAAP? GAAP, General Accepted Accounting Principles. वो पहले हो जाता था, लेकिन अभी the business have been complicated with globalized business is going on. In the after 1990, LPG concept started. So now globally and recognized Indian AS is the need of the hour, and India is to compete with the globalized world. So there's that type of accounting standard should be there, and accounting records should be used so that it can be useful for better purpose. इंडिया AS भी है, 1 में है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसी का नाम है, थोड़ा चेंज हो गया, 1 से 40 है। अब उसको भी याद रखिए, नाम और उसका टाइटल। मेजरमेंट बिजनेस इनकम कैसे होगा? बिकॉज बिजनेस इनकम में मेजरमेंट 2 टाइप का होता है, एक तो रेवेन्यू है, एक तो इनकम है, एक तो एक्सपेंस है, ठीक है। तो उसको मेजर करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यू टू सेट एन ऑब्जेक्टिव फॉर गाइड फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। टैक्स बेनिफिट हो सकता है, डिविडेंड पॉलिसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैनेजमेंट का एफिशिएंसी कितना है, क्रेडिट वर्दिनेस क्या है, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इसको आपको देखना पड़ेगा। ओके, there are 2 approach. One है transaction oriented approach, each and every transaction wise you have to focus. Number 2 trial balance, जैसे उसको focus करना पड़ेगा। This is all about, I think, block 1. This is all about block 1. Any doubt? We'll take 10 minutes. We'll take the doubt. Any doubt? It is now up to you, the students. You can ask any doubt. Block 1 theoretical framework, we discussed Unit 1 nature and scope of accounting. Number 2 Unit 2 accounting process and rule. Unit 3 accounting principle. Unit 4 accounting standard. Any doubt if you have, you can ask. Any doubt? Anything you can ask relating to the study, accounts. No doubt. No doubt is there for anybody?
Sir, accrual basis of accounting. Yes, yes, very good. Accrual basis of accounting. The other name of accrual basis of accounting is known as credit. Okay, or due basis of accounting. Credit basis of accounting or due basis of accounting. It is totally on credit. When you are purchasing goods on credit, ଆର କିଛି ଜିନିଷ ବାହାରୁ କିଣୁଛ ପଇସା ଦଉନ ସେଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଆକ୍ରୁଆଲ ବେସିସ୍ ଅଫ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଅର ତାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଲା ଡ୍ୟୁ ବେସିସ୍ ଅଫ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ତାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଲା କ୍ରେଡିଟ୍ ବେସିସ୍ ଅଫ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ନେଇଗଲ ପଇସା ଦେଲନି ମାଗଣା ନାହିଁ ୟୁ ଗିଭ୍ ଆଫ୍ଟର 1 month 2 month 3 month ଓକେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆକ୍ରୁଆଲ ବେସିସ୍ ଅଫ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ Yes, sir. okay any question you can freely ask any question if you have और कुछ पूछो पूछो सर दिसंबर में ये सारे के सारे 8 पेपर्स हमें देने होंगे ये तो सर बोलेंगे यार अजीत सर बोलेंगे ओके सर अजीत सर इज देयर और नॉट हेलो गुड इवनिंग सर हाँ बोलो सर जो जो भी सर जनवरी 2021 में सिस्टम पर एडमिशन हुए तो असाइनमेंट कब तक मतलब लास्ट डेट का अनाउंसमेंट तो हुआ नहीं सुनाई नहीं दे रहा है असाइनमेंट सबमिशन का लास्ट डेट कब है और ये अजीत सर बोलेंगे अभी लास्ट को अजीत सर उसको बोलेंगे जी सर थैंक यू Any other question? No question. Any other more question? So I would request Ajit sir to take up the session and the question the students doubt regarding assignment will be clarified. तो एनी डाउट तुम्हारा जो असाइनमेंट जो है असाइनमेंट और कुछ है यू आस्क टू द भुवनेश्वर ऑफिस इग्नो एज टोल्ड बाय अजीत सर ठीक है जो भी असाइनमेंट और जो एग्जाम का है वो भुवनेश्वर स्टडी सेंटर को पूछो आपका वेबसाइट मिल जाएगा ये तो उनको स्टडी ठीक है तो विल फिनिश द क्लास एनी मोर क्वेश्चन इज देयर नो सर ओके थैंक यू so thank you for everybody for patient listening so the class is over now okay thank you Huh? हेलो
हेलो। हेलो सुशांत भाई, कहाँ से हो आप? भाई राहुल केला। आप क्या अभी जनवरी 2021 सेशन में एडमिशन हुए तो? जी भाई। आप कहाँ से? मैं मयूरभंज से हूँ, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्लास भी करना है ना? हाँ जी। अभी 5 बजे से और एक क्लास है ना? हाँ 5 बजे से और एक है। हाँ अच्छा। आज, हाँ 5 बजे से और एक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, वहाँ पे तो ज्वाइन करना है ना? हाँ भाई। ठीक है चलो।